विश्व शांति धारा। मनुष्य आज विनाश के कगार पर खड़ा है। पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। ऐसे में विश्व शांति की आवश्यकता बहुत ज्यादा और तेज हो गई है। इस अशांत वातावरण में विश्व शांति कैसे और किस प्रकार हो सकती है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर के ज्ञानी, साधु संत, शास्त्रज्ञ और तत्ववेत्ता पुणे में एक साथ आए। अवसर था लोनी स्थित दुनिया के सबसे बड़े विश्व शांति गुंबद में आयोजित विज्ञान, धर्म और तत्व ज्ञान पर आधारित 8वीं वैश्विक संसद का। इस 3 दिवसीय समारोह में सहभागी ज्ञानी वक्ताओं ने विश्व शांति और मानव कल्याण के विषय पर अपने विचार प्रकट किए। आइए सुनते हैं उनमें से कुछ चुनिंदा विचार विश्व शांति दर्शन पर प्रसारित एक विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है विश्व शांति धारा। नमस्कार, विश्व शांति धारा में आपका स्वागत है। गीता की शिक्षा को सभी विश्वविद्यालयों के अध्ययन में एकीकृत करने की आवश्यकता है, ऐसा योग संस्कृतम यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर VVK शास्त्री ने कहा। This is not a speech, this is sharing of thoughts. Yoga is the recommended method and system for peace. Everyone agrees for that. Yogi is a citizen of nation who is healthy, ethical, cultured and conscientious. Conscientious means the person with the Atma Sakshi, Sakshi Cheta. It is not about the Shraddha, faith, Mata, all that kind of a thing. Advanced yogis generate an invisible shield protecting peace, peaceful productivity and prosperity at nations. At least this is what we believe, as the people in the Himalayas and all the Siddha yogis protect a national shield, and India is protected from several influences. Gita, our full name Srimad Bhagavad Gita, guides everyone, has guided everyone, those whose icons are put around here, to strive and deliver personally and socially to achieve and maintain peace. Antashanti, Bahishanti, Samajik Shanti or Adhyatmik Shanti. Now the question comes, what is this Shanti in Gita? The word Shanti comes in Gita in 2 different contexts. It is a practice directive to all citizens of nations, made for each according to their state, status, profession, potential, personality and practicality. The directive for unification of yoga and Sanskritam as Vak Yoga is the signature mark of Bharatiya Yoga Samskriti Samskara Sampradaya according to Gita 6:46. This is one element missing in all Indian universities' vision and policies. This needs to be integrated. The essence of Gita directive is tasmat, therefore, and it doesn't say what is therefore. Therefore, yogi bhava. First become and then continue to be. It is not a certificate you hang on the wall. Become and be a yogi. And the standard for that is Yoga Kshema, Swasthya, Saukhya, Shanti, Samruddhi, Amrutam. Missing elements from the vision and the deliverables from universities graduating engineers, doctors, administrators in the academic institutions. Therefore, there is a need for transforming universities to become the centers of excellence. समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने
आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो. जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरू म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे. Now in Gita context, Shanti comes in two understandings. One is called Adhyatmika Shanti or Brahma Shanti. That is for the front rows here. The central line separating the recipients on that side to this side. This is the Brahma Shanti people. They want to achieve the personal, spiritual, inner satisfaction. But what about the other side? The other side is not looking for Brahma Shanti. They are looking for something else. What you want on the other side is called Dharma Shanti. Dharma has got 10 lakshanas, which includes Nyaya and all that. Can I, with my education, live a respectful, responsible, dignified life?